Good evening पिला माने वेलकम टू वेदांग क्लासेस पावर्ड बाय वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपण जानिछंती सिविल सर्विस पयका वेदांग क्लासेस तरफ रु सिविल सर्विस पयका जो लॉन्च हेची हमर नय कोर्स तेमान होजन आपण मानकर एजुकेटर। सेकंड हमें जिबा कि आपनकर को टाइम रे क्लास अछि। फर्स्ट मॉर्निंग 8 am 9 am 5 pm 7 pm हला आपण के चारोटी स्लॉट रे आपनकर क्लास रहइबो। तापर आपण देखंतु जदि आपण प्रीलिम्स पई ट्राई करिया पे चाहछंती नेक्स्ट ईयर के प्लान करछंती ताले आपनकर प्राइस रहइबो पेड बैच पे जोडा हमर विश्वास बैच अछि प्राइस रहइबो 4499 रुपीस। जदि बोथ आपण प्रीलिम्स और मेंस मिसी के आपण प्रिपरेशन करिवे फॉर द नेक्स्ट ईयर ताले आपनकर प्राइस रहइबो 9999 रुपीस। ओके तापर आपनकर एटा नंबर अछि जोथरे के आपण क्वेरी आपनकर जहां भी अछि जहां डाउट अछि रिगार्डिंग सिविल सर्विस ताले आपण पहुंचे पारे कहि पारिबो। ठीक अछि। गुड इवनिंग। तापर हमें जिबा आपन जदि मेंस जो मानकर प्रीलिम्स क्लियर हेची ऑलरेडी बैच हमरो 10th नवंबर स्टार्ट हे सलानी तो सेति में हमको प्राइस अछि 7499 रुपीस। ऑप्शनल आपन को सोशियोलॉजी ज्योग्राफी होम साइंस हिस्ट्री एंड पीएसआर आपन को प्राइस अछि 3999 रुपीस। ठीक अछि। तो ऑप्शनल जदि आपन माने जॉइन करिया पे चाहछंती ए जो पांचटी आपन को सब्जेक्ट अछि ताहले आपन से रिलेटेड जदि किसी क्वेरी अछि ताहले आपन माने 8280532825 नंबर आपन कॉल कर परिबे कांटेक्ट कर परिबे आपन को जहां भी डाउट अछि ता क्लियर करा जिबा। आगु जिबा तो जेमति कि आपन जानिचंती हम खाली एथिक्स रे कथा होतले एटा आपन को सिलेबस अछि एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो हमें खाली एटीट्यूड विषय रे कथा होतले तो सेतबेले हम आपन कहितले कि गोटे क्वेश्चन हमर रहि जायतिला जो क्वेश्चन को आज हम डिस्कशन करबा। तो क्वेश्चन रे अछि कि ए पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसीडर्ड टू बी an essential characteristics of a civil servant who is often required to function under extreme stress. What contributes to a positive attitude in a person? So yesterday also we have talked about it. What is attitude? What is positive attitude? What is negative attitude? So layman jodi ame कहबा attitude means you like or dislike about certain person, certain event or certain certain object. Okay, I have a positive attitude towards this pen, but somebody may tell I do not have a positive attitude towards black color pen. I don't like pen who which is one black in color, but I can say that I have a positive attitude towards black color pen. Likewise you can say I have a positive attitude towards girls having long hair. I have a negative attitude towards girls having short hair. Okay, event suppose mu कहली अपन कहबे I have a positive attitude towards wedding, I have a negative attitude towards wedding. तो एमती आपनकर लाइक और डिसलाइक ऊपर डिसाइड करबो कि आपनकर एटीट्यूड। In last class also we have discussed how attitude form. First your habit forms, from your habit your belief formed, after your belief your value formation happened, and after value your attitude has formed. Okay, तो attitude subject जोटा आपनकर अछि this topic ता जो आपनकर it is very important for the civil service exam ethics paper. Okay, so theory ru they will ask you question about attitude, also it will help you in case study also. The question gonna chi a positive attitude is considered to be an essential characteristics of a civil servant who is often required to function under extreme stress. What contributes to a positive attitude in a person? ଯେତେବେଳେ सिविल सर्वेंट काम करନ୍ତି ତାଙ୍କର जा implementation of policy जो ତାଙ୍କର काम अछि तो there will be obstacles, there will be many obstacles that you want to do something but it is not going in your way or you are unable to function that because of other externalities. Okay, तो एथि पे आपण देखिबे कि आपण पॉजिटिव एटीट्यूड रहया को पड़िबो। ओके, बेले बेले आपण डिसीजन मेकिंग पावर अछि। Suppose you have taken one decision and that decision whatever you have taken is negatively impacting your work or your image or you did not succeed because you have taken a particular decision. तो सही मोमेंट रे आपन को पॉजिटिव माइंडसेट सहित आपन को ग्रोथ करिवार अछि। तो क्वेश्चन कोन पचारि छी ए पॉजिटिव एटीट्यूड कंसीडर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हम समस्त को बी पॉजिटिव जतबेले किछि फेल हुए बी पॉजिटिव, जतबेले हमरो बिजनेस लॉस होछि हम कहचंती बी पॉजिटिव। Positive rule, keep trying, one day you will succeed. This is what we tell to other people and this is what we believe. Okay, तो positive attitude को हमें आनिया पई हेले characteristics हबो it often require कोन माने extreme function जतो अछि ता भीतर हम extreme stress जतो आपण मान रहबे सेते बेले how this positive attitude going to help you. Okay,
तो यार हमर इंट्रोडक्शन में कौन लिखिबा व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड इंट्रोडक्शन ले आपण इंट्रोडक्शन ले आपण डिफाइन कर परिबे ऑलरेडी मु एटीट्यूड विषय रे लास्ट क्लास कथा हेतले जो माने क्लास मिस करिचो दया करके से क्लास देखंतु ताले आपको क्लैरिटी हे जिवो व्हाट इज एटीट्यूड ओके तो डिफाइन पॉजिटिव एटीट्यूड फर्स्ट आपण पॉजिटिव एटीट्यूड माने कोन सेटा आपण डिफाइन करिवे केमिति आपनकर पॉजिटिव एटीट्यूड कंस्ट्रक्ट हुए construction of the positive attitude construction of the positive attitude एटा आपण ब्रीफली लिखिबे एंड जंदी क्वेश्चन पचा छि कैरेक्टरिस्टिक्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाई एसेंशियल एटा भी आपण लिखिबे आउ आपनकर स्ट्रेस सिचुएशन ले हाउ स्ट्रेस सिचुएशन जेतले आपनकर अराइज हुए हाउ दिस पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स यू एटा आपण बॉडी रे रहइबो what contributes to a positive attitude already मैं कहि construction of the positive attitude सेटा आपनको contributes कारण आपनको contribute करे to develop a positive attitude जरा positive attitude develop करे पे तार contribution अलगा को जो factor अछि जो माध्यम अछि जोटा कि आपनको contribute करे to develop a positive attitude okay तो देखो मैं आपन गोटे आंसर रेडी करछि इंट्रोडक्शन लेवल की positive attitude characterized by optimism and constructive approach is crucial for civil servant navigating demanding situation. It enables effective decision making and public service delivery. Even amidst pressure, this response explore the factor contributing to such an attitude. यदि आपनकर positive attitude अछि, even also whatever you want to do that is not going the way you have planned or the decision you have taken that is not fulfilling your goal at that moment it will help you if you have the positive attitude. This is how I have decided to I have just given this description as an introduction although you can write define positive attitude whichever is suitable for you can write okay introduction ले आपण किछि भी लिखि परबे एटा भी लिखि परबे नहले आपण को जाउचंदी कि म आपण पॉजिटिव एटीट्यूड डिफाइन करबी सेमति भी आपण लिखि परबे सेकंड आपण आसीला बॉडी cultivating positive mindset केमती हबो a healthy mindset form the bedrock of positive attitude this involve focusing on solution practicing gratitude and cultivating emotional intelligence देखो जते बेले पॉजिटिव माइंडसेट आपन केमिति आसीबे सब बेले जदी आपन किछि प्रॉब्लम होची then you are focusing on the problem rather than focusing on the solution you are not thinking how can I solve this problem but constant you are thinking oh this thing happened discussing about this problem overthinking about it that leads to a negative formation of attitude that is why you have to always give more clarity or you have to shift your focus from thinking about problem to thinking about the solution को बेसी focus करे दरकार practicing gratitude को आपण practice करे दरकार you have to be gratitude towards the person they have helped you okay say thank you so much if suppose you are working in a you became an administrator that means what many people will be going to working under you so you have to show gratitude toward them you have to recognize the small achievement you have to recognize that what they are doing this is the best quality of a leader what is the quality of a leader who is a leader so charismatic quality आपण पाखरे डेवलप करे पे पड़बो ओके जदी वाले किछि पॉजिटिव जिंस हैला गुड इवनिंग मैम जदि किसी पॉजिटिव जिनस हैला आपनकर ऑफिशियली हे जाओ कि ऑर्गेनाइजेशनल हे जाओ एंड यू आर ऑलवेज टेकिंग यू आर द फर्स्ट वन टू टेक द क्रेडिट okay and if negative things happen then you are always pointing out okay because of you this thing happened you have not done your work properly so this created disruption or this created trust issue between the employer between the organizational functions that is why you have to maintain a positive attitude and positive attitude leads to and make you a very great leader okay cultivating emotional intelligence विषय आज डिस्कशन करबा ता पूर्व टिके मन तो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस when you understand your emotion you can understand others emotion and also you can make people inclusive towards your policy or whatever work you're doing so socially you are emotional intelligence at that moment when you can speak to the mind what is happening with other peoples you can understand you have the empathy means you can understand one people
ओके सपोज कि आम बेले कौन कहता एम्पाथेटिक देखो जो आपको वैल्यूज पढ़ा हम से मन रखिए एम्पाथी और कंपासन empathy and compassion. Everybody is talking about empathy and compassion, and these two values are very important for a civil servant. If you want to become a civil servant, you need to have empathy, you, you need to have the compassion. Empathy means you can exactly feel how the person is feeling. You will become an DM means you will go to a village and there you seeing a poor family and you are not empathetic toward that person. You cannot feel how the person is feeling and how poverty is taking away all his opportunities. Then you will never work for him or for the marginalized section or for the poor people. That is why you have to have cultivate empathy or you have to imbibe empathy characteristics from in your personality. तापर कौन आसिला ऑप्टिमिज्म एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच सब ऑप्टिमिज्म रहा दरकार ऑप्टिमिज्म हम कहते बी ऑप्टिमिस्टिक दैट मींस बी पॉजिटिव even also negative thing happens some people are there they used to break down they used to go to the stress they will go to the depression but at that moment you have to think I need to be optimist right now because I have to work on me or I something happened I did not get success or I failed miserably at that moment you have to think I have to work on my weakness I have to learn from my failure and again I will start this is optimistic मतलब कि तुमको सब बेले कौन पॉजिटिव रहबार अछि आ solution oriented viewing challenges as opportunity for growth foster and resilience जेमति जन जन अछंती कि मोर माने कोन कहबे मैम आपके इंग्लिश की परफेक्ट so suppose you have opportunities for growth foster resilience माने कौन कहबा जो आपनकर जेमति कि जति जिंस आपनको दरकार टू ग्रोथ आपनको से सब जिंस कंडुसिव एनवायरनमेंट रे आपण अछंती दैट इज योर रेजिलियंस फोस्टर करिया दरकार रेजिलियंस को प्रोपागेट करिया दरकार हाउ कैन यू डू दैट इफ यू आर पॉजिटिव if you have positive mindset towards a problem you need to have the positive mindset otherwise you will fail again okay if something happened you have planned something and in the meanwhile some other thing happened which lead to stress at that moment also you should know how do I solve this paper rather than giving the frustration okay how can this happen because you will become an administration then how can this happen you are responsible for that lack of showing gratitude to people at that moment you need to be very positive mindset okay fine something happened first I will work on my solution oriented first I will bring the solution to this problem after that I'll start working or after that I'll discuss this is what a optimistic person should do after that इधर देखो केमती अछि आपनकर एग्जांपल कोन अछि the Kerala government participatory approach in rebuilding after the 2018 flood showcased a collective positive attitude 2018 ले जदि आपण माने जानि थिबो तो केरला रे कोन हला बहुत ज्यादा भयानक रे फ्लड आस्थितला बहुत ज्यादा जिनस को नष्ट होइतला बट सेठी पॉजिटिव एटीट्यूड पाई का गवर्नमेंट पार्टिसिपेटरी अप्रोच माने समस्त को कोआ गेला समस्त पार्टिसिपेट करो एज ए होल समस्त जते भी स्टेक होल्डर अछंती समस्त को पार्टिसिपेट करे पे कोआ गेला सो दैट कि हम रीबिल्ड करि पारा जहां भी हमर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हेची बायोडायवर्सिटी लॉस हेची बाकी जो जिनस रे हमर लॉस हेची ताको हम जल्दी जल्दी रीबिल्ड कर परबा ओके सपोज जणे गोटे डिसीजन नेला यूनानिमसली एंड एवरीबॉडी इज कमिंग एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटिंग जब आम कहते गोटे फिस्ट पावर अधिक हम रेदर देन गोटे फिंगर पावर ओके गोटे फिंगर पावर केबे भी कौन हम गोटे फिंगर पावर केबे भी बेटर हो पारिबनी गोटे किंतु फिस्ट पावर अधिक हम तो फिंगर गोटे फिंगर अछि गोटे फिंगर को लड़ी पारिबो कि बट जदि गोटे प्रॉब्लम आसला कलेक्टिवली यू आर डूइंग कलेक्टिवली जकल तमे करबो ताले से कामटा जल्दी सॉल्यूशन हेपा कलेक्टिवली केतेबेले करबो टीम वर्क केतेबेले हबो जेतेबेले यू आर पॉजिटिव you are being a very good leader and you know how to show your gratitude that is how you can build a teamwork kari paribona team kemti hebe if you don't have a charismatic personality and you don't know how to handle stress you don't know how to handle your employees who are working under you lack empathy at that moment people will not coming to you yes thank you emotional regulation managing emotional effectively as advocated by the stoic enables rational
response to the stressful situation. Examples can civil servant involved in disaster relief effort during 2004 tsunami demonstrated emotional resilience. Emotionally also you have to be resilient. Sometimes what happened, we became more stressful emotionally when we start connecting. Okay, this thing happened, you something we feel anxiety, what to do, what to not do. Okay, but if you are having strong positive attitude, that time you know this is my emotion and this emotion is going to dominate me. At this moment I should focus on solution, I should focus what I should do, I should continue doing my duty rather than being depressed by my emotion. Emotional regulation is an art. Okay, I would skill be, but you can learn it. If you want to you can learn it. इमोशन को सब रेगुलेट करो. देखिए कि जितेबाला गोटे सिविल सर्वेंट थाए, तो सिविल सर्वेंट को बहुत जगह मे बी दैट पर्सन इज फीलिंग बैड फॉर यू, बट ही नीड टू बी और सी नीड्स टू बी very diplomatic with his or her answer. Even also she can be very blunt, she can tell you straightforward, but she has to be diplomatic because she doesn't know how the other person thinking about and she has to possess that empathy. That is how she can emotionally make a connection with that person. Otherwise how that person is going to make a connection with that person. Emotion regulation is also important. Suppose you are getting angry, you are frustrated, you cannot show that in your workplace. You have to regulate your emotion. Okay, if you know the art of regulating your emotion, then nobody can stop you. Then asila kon asila gratitude and mindfulness. Be mindful while you speak. Being an administrator, you cannot speak whatever in there in your mind or whatever in there in your heart. You can tell that okay, there is a article 19 where you discuss freedom of control connection better, emotional connection better. Yes. So ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର there is a article freedom of speech and expression, that is right, but when you are becoming an administrator, you are DM or SDM, you are representing the organization as a whole. Okay, at that moment you have to be mindful with your words. Recognizing and appreciating the positive aspect of life enhances overall well-being. Give India platform facilitate positive action through philanthropy, fostering sense of gratitude among the contributors. So एटा आपण मानकर मॉडल आंसर अछि, जहाँ भी एग्जांपल दिया छै अकॉर्डिंग टू मु मते थोड़ा बेटर लागले मु देछि. यदि आपण पाखरे ऑलरेडी बेटर एग्जांपल अछि, you can cite about any philanthropic activities from any administrator or any public servant. MP MLAs, they are also coming under public servant. One example in तो सेति पे आपण केवल ट्राई करंतु कि सेति आपण सेमति देई भी पारिबे कि आपण बारे से जिंस अछि आपण करि परिबे, तले ट्राई करंतु करिया पे. One example in Odia. Okay. Actually इमोशनल इंटेलिजेंस या पर टॉपिक रे कथा बा. एटीट्यूड तो ऑलरेडी लास्ट क्लास रे हम कथा हिचन. जदि नारायण आपण देखि नंदे से क्लास तो देखंतु एटीट्यूड माने कोन बुझी चले, तापर आपण केटा इजी लागियो. जेहेतु ए क्वेश्चन तो लास्ट क्लास रे रहि जायतले सेबित पे मोटे डिस्कशन कर. ओके, मु देबी आपण को ओडिया एग्जांपल, डोंट वरी. तापर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आउ रीएनफोर्समेंट. देखो जेतोले क्वेश्चन हम कले ना, क्वेश्चन से पचारछि व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू पॉजिटिव एटीट्यूड इन ए पर्सन. कौन कौन कंट्रीब्यूट करछि हम सेही पार्ट के बे जाइछन्ते. ओके, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस factors plays a significant role. पहले mentorship and role model. Suppose you have a mentor, suppose आपण मानकर मम्मी अछंती, बाबा अछंती, टीचर अछंती. जेतेबेले सेमाने आपण को कोन करिवे, गोटे पॉजिटिव एटीट्यूड सिखेबे. सपोज आपण फेल हेले तो सी आपण को डिमोटिवेट न करिके सी आपण को बारंबार कहबे कि ठीक अछि, इट्स ओके, यू हैव ट्राइड एंड इट इज गुड. जेमति कि आपण गोटे स्टोरी देखिथिबे मध्य प्रदेश रो, मे बी मध्य प्रदेश आई थिंक मध्य प्रदेश रे गोटे पिलाटा 10th क्लास रे फेल हो जाइतिला. आ सेति पे त बाबा गोटे माने एते भलो पेरेंट्स हे, सेति पे त बाबा गोटे केक आनिले आ सेलिब्रेट कले कि ठीक अछि, सब सांग मान को डाके कि टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस. इट्स फाइन टू फेल एंड फेल्योर डजंट डिफाइन द पर्सन यू आर. तो तमे जो भी पर्सन होबो, जहां भी होबो कि आपण माने जहां लाइफ रे करिवे, ए एग्जाम रे फेल हे गले ही आपण गोटे बेटर पर्सन हेई थानते कि एग्जाम रे फेल हेले बोली आपण गोटे खराब पर्सन हे गले. नमस्कार. तो सेमती किछि नाही. एग्जाम टा आपणकर गोटे ओरिएंटेड अछि
माने गोटे कन्फाइंड सिलेबस अच्छी पढ़ुं इंटेलिजेंस जो आम कौन ना इंटेलिजेंस 2% कैन बी इंटेलिजेंट सपोज मुझे कहबी कि जड़े जदि अब आप देखिए कि जड़े तेंदुलकर हो गल कि विराट कोहली हो गल दे आर प्लेइंग क्रिकेट दे आर इंटेलिजेंट इन प्लेइंग क्रिकेट बट जड़े है आप साइंटिस्ट अच्छा आइनस्टाइन हो गले he is also intelligent tendulkar also intelligent but he became cricketer and he become scientist suppose आपण दुई जण सांग अछंती जणे आपनकर डॉक्टर हे गेले जणे इंजीनियर so both are intelligent but he is intelligent in doing engineering and he is intelligent in doing doctor okay तो इंटेलिजेंस आपनकर एई जिंसर माप होबनी कि आपण ओपीएससी बाहर कर पलेन कि सिविल सर्विस क्वालिफाई कर पलेन बुझले कि नहीं तो आपनकर एई जिंस कन्फाइंड सिलेबस अछि जे सिलेबस को भलो अंडरस्टैंड कर पाला बुझी पाला देन से क्वालिफाई कर मे बी दिस ईयर इज नॉट फॉर यू आउ किछ तमर लाइफ रे थिबो कि आउ को जिंस तो बेटर हेतिबो से ही नथिबो बुझ पाले कि नहीं तो सेमती डिमोटिवेटेड हबार नहीं तो एक्सटर्नल फैक्टर के रोल मॉडल हे गला कि आपनकर मेंटरशिप हे गला सपोज आपनकर जन मेंटर अछि कि टीचर अछि सब आपनको पॉजिटिव पॉजिटिव आपनको कहतबो इट्स ओके बेटर टू फेल इट्स ओके यू कैन ट्राई मोर you can try harder do hard work definitely your hard work is going to pay at that moment you get motivated okay fine somebody is supporting you even also in a low stage it gives you a positive attitude that somebody have that confidence on you okay second जिनस कौन आसला एग्जांपल है तो mentoring young minds program by the ministry of skill development and entrepreneurship promotes positive development जदि मु एई जिनस एथिबे लिखा है देखंतु जदि बुझेबा है डिफरेंट थिंग बट लेखिला बेले हमको तार पर्टिकुलर वर्ड्स दबा पे लिखिबो आ गवर्नमेंट रो को स्कीम अछि कि मिनिस्ट्री रो कोडी पर्टिकुलर मिनिस्टर कोन स्कीम अछि कि को एडमिनिस्ट्रेटर रो पॉजिटिव एटीट्यूड पाए he or she got recognition or he or she got award से जिनस को भी हमको इनकलकेट करबा पे पड़ो हला राइटिंग इज अ डिफरेंट थिंग तापर आपन को आसिला organizational culture a workplace that values positivity well-being foster a conducive environment suppose मैं भी आपन के पढौछि वेदांग रे पढौछि suppose कोनोसी कारण रो मो क्लास रिव्यू भलो जाउनी रेवेन्यू भलो आसुनी and they are pointing me out like okay ma'am you're not doing well enough you have done this they're always bringing my mistakes so this is a negative attitude but when they will start telling it's okay ma'am you are doing your best we will work on it we will together will work on it you just you continue teaching after that we'll see what we can do more or try to change your teaching style little by little but teaching is a different type of skill okay everybody teaching style is different तो सेतिबे तापर हम काम कर दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड दिस वर्क प्लस गिव्स मी अ पॉजिटिव एटीट्यूड तबे मते आउरी काम करबे इच्छा हो ओके फाइन इवन आल्सो दिस नॉट गोइंग वेल आई विल ट्राई हार्डर टू मेक इट बेटर जदि आपण फेल होतबे आपण कने तो आपन तो किछि हबनी तू तो किछि करिवार लायक नाही सेतु आपण नेगेटिव एटीट्यूड स्टार्ट हे आपण भाबे कि मु किछि कर परबे मो लाइफ ही बर्बाद बुझ पाले कि नाही तो से जिन से केबे आनिया को देबे तापर असले एग्जांपल कोन अछि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्फसाइजेस ऑन एम्प्लॉय वेल बीइंग प्रोग्राम कंट्रीब्यूट टू ए पॉजिटिव वर्क कल्चर जदि आमे जेकड़े कोना सबटु बेटर प्लेस टू वर्क सबटु बेटर प्लेस टू वर्क रे सबले प्राइज के पाइ जानछन जे कंपनी कोन से कंपनी रे नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स सबले पाइ के सब बेटर प्लेस टू वर्क ला से स्ट्रेस दिएनी एम्प्लॉय मानन को सबले बेटर व्यवस्था को रिकॉग्नाइज करे स्टार्ट गोटे पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड हो जण गोटे काम करे पे इच्छा जेंति कि आपण माने देखुचंडी बेले बेले शॉर्ट आस जाउथो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रे हम को एआई फैसिलिटी अछि जिम अछि सोया पे जदि आपण इफ यू फील स्ट्रेस सोया पे गोटे रूम अछि आपण जिबे हाफ एन आवर कि 50 मिनट्स रेस्ट हमें गेम खेले पे एक्टिविटी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अछि दे आर गिविंग यू वेरी डिलीशियस फूड टू कंज्यूम ड्यूरिंग योर ब्रेक्स ओके आपण कॉफी रो व्यवस्था अछि लंच व्यवस्था अछि जेमि कार्डबोर्डी वाला जो कंपनी अछि तो से कंपनी माने आपण देखिबे सेठी आपण चॉकलेट रखाई सब जो समन फीलिंग स्ट्रेस दे कैन ईट चॉकलेट so this is a positive attitude organization let a positive attitude को देखौछि ना because they are comforting their employee ओके कंपनी जतबे चलिबो एम्प्लॉय मान को नेक चलिबो बट जोटे एम्प्लॉय मान को डिसरेस्पेक्ट फील होतबो से मानकर कंफर्ट को हमें देखु नथिबा से जगह कोन हम से पॉजिटिव एटीट्यूड कल्टिवेट हे परिबो नाही कि कंपनी बेटर हबनी सो एम्प्लॉय तो बेटर करबनी कंपनी भी बेटर हबो बुझबले कि नहीं positive reinforcement and recognition acknowledging achievements and contribution boost moral and reinforce positive behavior जेमती हमर नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस recognize and reward innovative public service initiative जदि कोनोसी सर्विस सर्वेंट अछंती से कोनोसी गोटे पर्टिकुलर इश्यू को नेकी गोटे बेटर इनिशिएटिव आनी जहाँ द्वारा कि
आपनकर वर्किंग कंडीशन ठीक होची कंट्री रा डेवलपमेंट होची लोक मानकर डेवलपमेंट होची बेसिकली पोर मार्जिनलाइज जो माने लेस अपॉर्चुनिटी जो मानको प्रोवाइड करा है से मानकर जेकल डेवलपमेंट होची से अनुसार गवर्नमेंट गोटे कोन अवार्ड दोछ सपोज आपण जानि चंती ए जिंसटा गले मते अवार्ड मिलबो ताले आपण कॉम्पिटिटिवनेस भी तो सेठी बढ़िबो आपण माने भी बेटर करे पे चेष्टा करिवे रिकॉग्निशन मिलबो जेता हम स्कूल ले कंपटीशन होतला प्राइज रखा होतला जदी प्राइज को पाया पे समस्त करथले कि नै कि आपण माने जो स्कूल ले कुआ जाउतो स्कूल टाइम रे जे एतिक जगह रे गार्डन अछि जो सैटरडे जो मैम सफाई करा जिवो स्कूल जे भलो सफाई करबो नीट एंड क्लीन करतु ताको गोटे प्राइज मिलिबो so you will be more enthusiastic about this activity you will do it in a proper way so ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ନା ଆୱାର୍ड ଦିଆହଉଛି so that ଅନ୍ୟ ମାନେ ବି କଣ ହେବେ ଇନ୍ସ୍ପାयर ହେବେ कि ମୁଁ ବି ସେ ଜିନିଷ ଇନକଲକେଟ କରିବି in my workplace ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ତାପରେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର conclusion ଅଛି a positive attitude nurtured by internal resilience supportive external factors is essential for effective governance by fostering a culture of positivity within the civil service India can strengthen its administrative framework and enhance public service delivery so public service delivery जोटा आप माने public servant हला परे you will deliver or that means you will implement the policy was made by the government ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସେ ଜିନିଷ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ एक्सटर्नल फैक्टर भी आपनको सेव करिवो ଆଉ इंटरनल रेजिलियंस तम निज भीतर तम मोराल्स कोन अछि इंटरनली एंड एसेंशियल फॉर द गुड गवर्नेंस के इफेक्टिव गवर्नेंस माने जोटा गवर्नेंस जोटा कि दरकार अछि फॉर द कंट्री फॉर द पीपल हु आर द पोरेस्ट और हु आर मार्जिनलाइज्ड ओके सेमान को काम करे जो गवर्नेंस दरकार अछि केमथि हे परिबो विथ द पॉजिटिव एटीट्यूड एमिति भाबरे आपण एको कंक्लूजन करि परिबे अदरवाइज यू हैव एनी extraordinary examples of an administrator who has cultivated or who has shown the positive attitudes सेथरे भी आपण ताको लिखि परिबे बुझ पाले कि नै तो एबे एबे हमर गोटे क्वेश्चन हमें कथा हले एबे हमें जिबा इमोशनल इंटेलिजेंस ऊपर तो काली जेमते हमें एटीट्यूड कथा हेतिले आज सेमते मु तमडे छोटो टॉपिक आनछि जोटा कि इमोशनल इंटेलिजेंस माने कोन सिलेबस रे पार्ट जो माने देखिथिबे तो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस ए टिके आगुर मु कहली अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखंतु इमोशनल इंटेलिजेंस रे तीनटा चारटा जोते भी भलो भलो आपनकर एग्जांपल्स अछि मु एटा कोड करछि जदि आपण माने चाहउचंती पीडीएफ तो शेयर हे जिवो फिर भी जदि आपण चाहउचंती नोट बने परबे तो जते बेले आपण को दे विल आस्क यू एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस यू कैन कोट इट ओके फर्स्ट कोन अछि अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इमोशनल इंटेलिजेंस इज द capacity to be aware of, control and express one's emotions and to handle interpersonal relationship judiciously and empathetically. तो जतबेले आपण मानक पाखरे एबिलिटी आसी जिवो to control your emotion to be aware about your emotion that means I am feeling bad I am aware about it my mood is not good I am aware about it from my home something happened and I was not feeling good even also last night something happened I'm not feeling good okay but I will come to this class I have to control my emotion I am feeling very sad I want to cry but I cannot cry while I'm taking this class I have to control my emotion I have to be aware about my emotion so first मैं aware हेबी control करिबे and express one's emotion आ जनकर emotion को बुझी के काम करबा students are here they are here to study I cannot bring my personal biases and I cannot make people to feel less important to me class जो माने आसुन से माने मु मोर कोन करि ताको इमोशन जेमति अछि अटैच अछि कि मैडम आसीबे कि नुवा जिंस सिखबा ताको मु जानि छै सेते मु मोर अवेयर करबी तांकर इमोशन अनुसार ही मु काम करबी कोन जुडिशियसली इंटरपर्सनल रिलेशन दिन बेटर हो पर्सनल रे मोर जो रिलेशन अछि एज ए टीचर आई हैव रिलेशनशिप विथ यू एज ए सिस्टर एज ए डॉटर एज ए तो मोर एमती सब जगह रिलेशन अछि कि नै तो से रिलेशन को मु जुडिशियली आ एम्पैथेटिकल जेतबे मु करि पारुछि दैट मींस आई एम ए don't do this if you are in personal space you can cry not an issue you should not suppress your emotions and it will create a problem later on then आपनकर after आपनकर की देखले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अनुसार एटा होछ तार definition even also you want to remember this definition also fine emotional intelligence involves recognizing and managing one's emotions while empathizing with others
to foster effective social interaction and relationships. It enhances self-awareness and interpersonal harmony. जदि मु खाली मो इमोशन को देखिबी बाकी जे मो सामने अछि कि बाकी जहा से तुम इंटरेक्शन करछि मु तार इमोशन को जदि जानी पारुनी बुझी पारुनी then also I'm not emotionally intelligent. Okay, so I have to be aware and control about self regulation हवा दरकार मो इमोशन लो आ मु भी empathetic हवा दरकार towards other person. मो सामने जे अछि तार इमोशन कोन अछि मते ता जगह रहि कि भाबेर अछि बुझ पाछ कि नै सपोज मते बहुत ज्यादा राग लागुछि मो रागले कोन करबी बहुत ज्यादा चिल्ले देबी गाली दे देबी एटा मोर इमोशन मु जानि से मते राग लागु बट आई डोंट हैव कंट्रोल आई विल डू दैट बट यदि मु इमोशनली इंटेलिजेंट हेतिबी मते जते खराब लागु जहा भी लागु आई विल सप्रेस माय इमोशन आई विल अंडरस्टैंड दैट पर्सनस इमोशन आल्सो ओके तो समस्तकर इमोशन एथिबे हम कहते इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेटर देन इंटेलिजेंट जो इंटेलिजेंट जदि आपण हेचन ताटो बेटर कि आपण इमोशनली इंटेलिजेंट जने हेतु सी बेसी ज्यादा कोन सक्सेस पाइबो जदि आपण एप्टीट्यूड आपण बेटर अछि इफ यू आर इंटेलिजेंट पर्सन but you are emotionally intelligent person so emotional intelligent person will get more success is somebody who is intelligent okay ଆପଣଙ୍କର components of the emotional intelligence तो emotional intelligence रे components सब कोन कोन अछि first होछि self awareness you know that how you are feeling what is your exact emotion you know that second होछि self regulation you can control you can regulate your emotion okay third is motivation feel होता है कि motivation self motivation nobody is coming to tell you that be motivated motivation निजवा को आसे दरकार कोड motivation आनी that is also emotional intelligence रे गोटे component empathy आपनकर empathetic हवा दरकार empathy towards other people आजिकल गले administrator जेकल मु कथा भी तो empathy towards weaker section empathy towards marginalized section okay आ कोन आपनको social skill हवा दरकार सोशल स्किल समस्ते सोशल नहुंते समस्ते सोशल नहुंते सोशल हवा पई गोटे स्किल लगे अछि समस्ते निज विषय सब जन से कहि परिबे कि वो जो इंट्रोवर्ट थांते दे डोंट लाइक शेयर थिंग्स सोशल थिंग्स डिफरेंट थिंग सोशल समस्ते हे परिबे सोशल समस्त से मिसी दिबो जुआडे भी गले फ्रेंड बने देबो कंपनी स्विच कला गोटे दिन फ्रेंड हे गला चाय पार्टी चलची कॉफी पिया पे जाउछो दैट मींस यू आर वेरी सोशल यू हैव द स्किल but you have to have if you are emotionally intelligent person you have the social skill if you don't have then you think you are not an emotionally intelligent person these are the components तापर हमें देखिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन माने कोन इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज अ मेजर ऑफ पर्सन cognitive abilities about other determined through the standardized testing सपोज वो देखिबी कि आपनकर जदी आपन गोटे रीजनिंग वाला पेपर दिहला आपन को टेस्ट कराला कोन रीजनिंग तो रीजनिंग रे आपन को देखाला कि जणे 1 मिनिट रे 10 टा क्वेश्चन कर दोची हला तो जदी इंटेलिजेंट क्वेश्चन मपा जबो एबिलिटीज mental abilities like how I talk about your aptitude like your mental abilities to grasp something the mental ability to perform work how goodly or how effectively or how you are performing this work so person's cognitive and mental cognitive abilities about others determined through the standardized testing test karo debe JEE mains exam hochi JEE mains से में कोन इंटेलिजेंस क्वेश्चन को टेस्ट करा होची if you qualify means you are intelligent or you are fit for the IIT okay तो तबे एबे इंटेलिजेंट आपन को देखाउछ कोन देखाउछ इंटेलिजेंट it reflects an individual capability of logical reasoning problem solving and understanding complex concept जदि आपन के पढ़ा जो probability permutation so some students will be there they cannot understand what is probability questions may they will not solve the mathematics very quickly with comparison to other people why because they are not intelligent so they आपन के emotional से किसी लेना देना नहीं here your mental capabilities ऊपर लेना ना अछि कि तोर mental capability कोन अछि to you are intelligent or not तापर आपन कोन असला the concept was introduced by the French psychologist Alfred Binet and later defined by the William Stein तो एटा किछि भी तमे एटा लेखि मन रखितबो एवरेज को जदी 100 अछि तो within most people scoring between 85 to 115 significance कोन अछि I scores IQ मतलब emotional quotient scores are used for educational placement assessing intellectual disabilities evaluating jobs applicants and predicting job performance and income जदि आपण माने इंटेलिजेंट हेतिबे से अनुसार आपण को जॉब मिलबो सपोज आपण को इंटेलिजेंट you can learn many skills and you can do also many skills आपण माने कोन आपण ओडे बहुत ज्यादा एबल है पर्सन हेतिबो you can teach mathematics you can teach physics
you can teach chemistry, so you're intelligent. So you can teach three subject simultaneously, so you will be get more paid than somebody who is teaching on a single subject. This is what happened. So this is abilities, this is a mental capacity, cognitive abilities to perform a duty. That means you are difference kon achi emotional quotient how intelligent quotient measure. Nature kon yaar achi measure emotional and social skills, focusing, managing emotion, when IQ assesses cognitive abilities like reasoning and problem solving. ଯେତେବେଳେ ତମେ intelligent ଅଛ ମାନେ you can solve the problem very quickly, very frequently. But if you're emotional, then you will become very social thing. You will make, you will develop the social skills. You can regulate your emotion. Even also you are getting angry, you are in a meeting, you will not show your angriness in that meeting. Suppose family something happened, so you are coming to your workplace, you will not show that. That means your emotional intelligence, you know how to control your emotion. Okay. Second asla kon application code achi you building relationships, resolving conflicts, whereas IQ for academic and logical challenge. जदि आपण चाहउछन्ती मु मैथमेटिक्स रे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करिबि, मु जेई मेन रे भलो स्कोर आनिबि, so that ki I will get admission into IIT Bombay or IIT Delhi. So at that moment you need intelligence quotient. But when you want to make a relationship work, when you don't want to break your friendship or any relationship, that is you are involved in any relationship, at that moment you need to have the emotional intelligence, or you, that means empathy towards your partner, empathy towards your parents, empathy towards your friend, empathy haba darkar, social haba darkar, regulate kara darkar, awareness haba darkar. These are the components of the emotional intelligence. Okay. Then development, it may improve through learning and practice, while IQ remains relatively stable. Both are relatively stable. Somebody who is very poor in mathematics, how much hours that person will give for the subject to get 100 out of 100 marks? Think about it. So maybe it is not possible, because if you are not capable enough, your mentally cognitive ability is not capable enough to solve a permutation or combination type of problems. So you cannot do that. Even also do practice, how much? There should be some cap. Okay. Because आपन mentally support ही कोनी से काम करे पे, आपन से जब जबरदस्ती करे पे पड़ो, जबरदस्ती आपन करतो, after some moment you will feel like, oh my god, what I'm doing, I should not be doing this. तो सेठी जिन आपण डेवलप करि परिबे नै बहुत ज्यादा. बट इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव हे परिबो थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिसेस. थ्रू प्रैक्टिस में कहउछन्ती कोन, योगा करंतु, जति राग लागुची पानी पी दियंतु, टेक ब्रीथ. ओके. ब्रीथ नवा स्टार्ट करंतु, लॉन्ग ब्रीथ नवा स्टार्ट करंतु. तदा कोन स्टिमुलेट करबे, आपण एंगर को आपण सप्रेस करिवे. बुझबेले कि नै. तापर रिलेटिवली स्टेबल कोडा आपण आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन को आपण केबे भी से जिनस को आपण एते मात्रा रे डेवलप करि परिबे नै. दिस इज द क्वालिटी यू आर बोर्न विथ. This is the quality or mental capability that it cannot be practiced, that cannot be learned. Okay. तापर अपन example asila, you can involve solving interpersonal conflict and empathizing with others, while IQ relate to solving complex problems and logical reasoning task. Suppose अपन EQ high अछि, emotional quotient is your high, then you can understand. Suppose one person came to your the person is working in your office under you, then you can understand like something happened through your behavior, because your emotional intelligence, how that person is behaving so differently, because something happened with his family, something happened with him, that person is very feeling emotionally low, that you can understand. But IQ is then some project came, some policy have launched, and you are a better intelligence capacity to implement this project effectively. This will be the application. Okay. Significance of significance strong relationship आपण build करिवो and teamwork रे आपण develop करिवो. तो relationship जदि आपण emotional intelligence हेतिबे ताला आपण सब बेले मन रखंतु relationship आपण strong हबो, whether it is your parent or siblings, your friends, with your business partners. तो जोठी भी जिबे with your organization or department, सेटा आपण relationship better करि परिबे. Teamwork आपण भल, a manager listen to team concerns, improve morale and cooperation. Suppose you are coming to office, okay, and your manager is telling every time you're coming 5 minutes late, then you will start coming by 9 o'clock and you leave exactly 6 o'clock. If the manager start listening, what happened, why didn't you come at time, something happened in your family,
are you feeling good, are you comfortable, anything happened, tell me. That will mean one manager is emotionally intelligent. The person is asking, at that time you feel good, okay, somebody is concerned about me, somebody is concerned, something happened with me. At that moment you'll start like, fine. So they will also, they'll tell you that okay, 10-minute task is there, please complete and go. That time you willingly will do that, you will complete that task, you will go. This is what you can, relationship ଆପଣ better କରିପାରିବେ, moral better ହେଇପାରିବ, cooperation better ହେଇପାରିବ, mental well-being and stress management. ଆପଣ emotionally better ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ stress ଭଲ manage କରିବେ, ଆପଣ anxiety ଭଲ manage କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା butterflies ସେଇଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କୌଣସି ଜିନିଷ extreme କୁ ଯିବେନି, ତ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ରହିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ତ କ'ଣ ବେଟା, aids in managing stress, anxiety, boosting resilience in high pressure situations. A student uses mindfulness techniques in handle exam stress. Suppose आपनको exam रे बहुत ज़्यादा stress अच्छी, जदि आपण emotionally intelligent थिबे ताहले आपण कोन करिवे, आपण manage करि परिबे, आपण निजरो pressure को manage करि परिबे. This is exam, but this thing happened, I have studied enough, I am prepared enough, I am going to give my best to this exam and definitely I am going to success. Okay, but जदि आपण emotionally intelligent, oh my god कोन हबो, मु सेटा पढिनी, से सब्जेक्ट छाड़ देली रहि गला, कोन करबी, रिवाइज भलसे करबी. So this is how you will feel. So एडा आपनको emotional intelligence better. Effective leadership and conflict resolution आपनको better करबे to achieve constructive solutions. A leader motivates a diverse team while resolving conflict. Suppose कि आपनको जेतबेले महात्मा गांधी का एग्जांपल आपण नै परिबे, that person was emotionally intelligent, that is why that person can navigate from different जेतबेले भी महात्मा गांधी पूरा country को, you remember, think about it, how charismatic personality he hold, because our country now also in 2025 going to complete very soon. So 2025 रे भी हमें इंटीग्रिटी करि परनांती, हमें कल्चरल डेवलपमेंट करि परनांती, हम जो डाइवर्सिटी अछि ताको मैनेज करि परनांती, बट सी जतबे 19 15 16 ले से करूथिले, तले भाबो केते इमोशनली से इंटेलिजेंट हेतिबे, बुझपरछ कि नै? तो सेतेबेले आपन कोन हबो, लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप सहित आपन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी हबो, कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन भी आपन आनि, मोटिवेट करि परे लोकन. जदि आपण इमोशनली इंटेलिजेंट हेते माने कोन, बीइंग सोशल स्किल आल्सो ए कंपोनेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस. सोशल हेतिबे, अन्य माने प्रति एम्पैथेटिक हेतिबे, आपण गोटे वैल्यू रहबे, सो दैट कि पीपल विल लिसन टू यू. कंस्ट्रक्टिव टीम वर्क डेवलप हो, तमे जो कामडा भलो भाबरे हेइ पानो अल्प टाइम रे इफेक्टिवली यू कैन डू दैट. ओके, तापर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ता आपण भलो इन्फॉर्म कर, बैलेंस रैशनल एनालिसिस विथ इमोशनल इंसाइट फॉर साउंड एंड एथिकल चॉइस. A business owner consider both financial outcomes and एम्प्लॉइज मोरल भी आपण जानि परिबे, तांकर रिफॉर्म भी आपण बेटर भाबरे करि परिबे जदि आपण इमोशनली इंटेलिजेंट हेतिबे. आ कोन रेजिलियंस एंड पर्सनल ग्रोथ, जदि आपण इमोशनली इंटेलिजेंस, यू हैव ए पॉजिटिव माइंड, you are empathetic, you are, then obviously personal growth is going to happen. Okay, so and drive continuous self improvement after setbacks. Example, an athlete reflect a failure to achieve greatest success. जदि आपण फेल হৈ गले भी को जगह रे, बट आपण इमोशनली इंटेलिजेंट अछि तले आपण निहाती ना निहाती भाबरे आपण सक्सेस पाइबे. तापर आसना चैलेंजेस कोन अछि, ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस एंड रिजिड नॉर्म. बहुत ज्यादा रिजिड नॉर्म अछि, फ्लेक्सिबल नाही नॉर्म रे, माने पे पड़े पे पड़ियो हला. जदि आपण ओटा एडमिनिस्ट्रेशन आपण माने पे पड़ियो, करे पे पड़ियो, तो एते रिजिड अछि ना, तो आपण इमोशनल आपण करना देखै पारन, एक्सप्रेस कर पारन, सब में सप्रेस कर रखा अछि. व्हाटएवर यू थिंक डजंट मैटर, माने जेतली नॉट डजंट मैटर, कंपनी नीड दिस, company want this to finish by evening, I don't know, I don't listen to your personal growth or personal what is happening in your life. So that moment it will create, so organization resistance अछि ना. तो कोन हायरार्किकल स्ट्रक्चर आउ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम. हायरार्किकल स्ट्रक्चर आई मीन सपोज एसडीएम जण अछंती, बट ही इज वर्किंग इन द फील्ड, so he knows my challenge English today. What I don't understand means you have a problem studying English. Narayan, you have a problem with English language, do you want to write OCS exam in Odia also, you can write, not an issue. Even somebody who is facing problem, जदि आपन को problem होछि ना इंग्लिश रे, ओडिया रे भी आपन एग्जाम लिखि परिबे. ओके, किछि भी टेंशन नै, लिखि परिबे आपन आराम से. ओके, तापर lack of structure training, the absence of formalized program and resources limit opportunity to develop and enhance emotional intelligence. समस्त खाली कहउछन प्रोफेशनल हबा दरकार, जेमति हमरे भी ओपीएससी नबा कि यूपीएससी नबा, तो इमोशनल जिंस तो से मान देखु नंत ना. Ebe because of this ethics chapter they have included, somewhat they are getting to know your emotional aspect.
बिफोर आपण मैंने भावत एथि चैप्टर ही नथिला तो से एबिलिटी देखुले इंटेलिजेंस देखुले मेमोरी करके आपण केते लिखि परछन से अनुसार सिलेक्शन होतला तापर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट हाई प्रेशर सिचुएशन सच एज emergencies or crisis challenges individuals ability to remain emotionally composed and effective आपण किसी करे पे चाहउछंती यू आर एम्पैथेटिक यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट बट एमती स्ट्रेस रे अछंती एते प्रेशर एनवायरनमेंट एते खराब अछि एते स्ट्रेसफुल अछि यू कैन नॉट डू एनीथिंग ओके तो सेटा भी आपण गोटे प्रॉब्लम आ कोन अछि पर्सनल बायसेस एंड कल्चरल बैरियर्स prejudices stereotypes and cultural constant impede empathetic interpretation and inclusive decision making जेमती कि आपनकर स्टीरियोटाइप अछि एई पर्टिकुलर कास्ट लोक माने भलो ए कास्ट लोक माने चोर कोन करबे आपण स्टीरियोटाइप प्रिजुडिसेस झियो मानकर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भलो न झियो मानकर मैनेजमेंट भलो न झियो मानकर लीडरशिप भलो न तब आपण गोटे प्रिजुडिसेस समाज रे अछि आपण जे से जिंस धरथिबे दैट इज आल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट तो पकेबो ना तापर आपण मेजरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इश्यूज इमोशनल इंटेलिजेंस इन इनटैंजिबल नेचर मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेजर द प्रोग्रेस इनटैंजिबल मींस जोटा हम छुई परबान हला इनविजिबल जोटा देखाउन तो इमोशन को आपण जनकर फीलिंग्स जनकर इमोशन कोन जानिबे आपण कमी छुइबे केमी जानिबे तो जब इनटैंजिबल ताको मेजर केमती करबे इवैल्यूएट केमती करबे इमोशनल इंटेलिजेंस जोटा अछि बोले इवैल्यूएट केमती करबे तो करि परबे ना ओनली वी कैन सी द थ्रू द बिहेवियर्स that also someone can fake the behavior okay attitude jeka mu kahitil na suppose you can fake your attitude okay like you don't like women in your office but they have studied they have qualified they're working under you they are your colleague you have to respect them you have to perform I mean you have to be behaviorally well with that person with that lady after that in family kon तुम करछ के जानते तुम domestic मारो domestic violence करथो ओके तो तुम झियो को पाठ पढ़े पे दोनो तो फैसिलिटीज तो यू हैव दैट माइंड एटीट्यूड समथि अछि बट तुम शो करछो तो एटीट्यूड केबे आपण जानि परिबेन बिहेवियर आपण केबे तार एटीट्यूड कोन अछि केबे जानि परिबेन सेंति इमोशनल भी इनटैंजिबल हो जाउछि देखा थोड़ी होछि केमि जानिबे आपण केमि जानिबे तो एटा आपण मेजरमेंट तो करि हेबनी तापर रिसोर्स एंड प्रायोरिटी कंस्ट्रेंट्स लिमिटेड फंडिंग टाइम कंपीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटीज ऑफन रेस्ट्रिक्ट द फोकस ऑन restoring emotional intelligence in organization तो जते बेले आपण फंड कमी अछि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आसले एती फंड अछि तो सेही फंड भीतर आपण काम करिर अछि कि ताटू कम फंड भीतर आपण काम करिर अछि तो आपण केमिति करिवे करि परिबेन सेठी आपण जदि इमोशनली आपण इंटेलिजेंट अछंती आपण एम्पैथेटिक अछंती सोशल स्किल अछि बट एटी कंस्ट्रेंट हे गला ना कंस्ट्रेंट माने आपण को रेस्ट्रिक्शंस हे गला हैला तापर आपण ट्रेड टू द इमोशनल इंटेलिजेंस इन कंटेम्पररी सोसाइटी एबे कोन प्रॉब्लम होछि डिजिटल डिपेंडेंसी over reliance on digital communication limit face-to-face interaction reducing opportunity to develop emotional awareness and empathy तो देखंतु आपण माने जते बेले माने एबे आपण देखबे even also in relationships also couple fights a lot okay just because they cannot see each other they are not getting the emotion whatever I'm talking in suppose I'm talking on phone what I'm telling how my emotion is how my mood is you cannot convey but you're listening my voice how do you know that how I'm feeling तो डिजिटल डिपेंडेंसी पाई भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होची व्हाट्सएप रे चैट करा होची इवन आल्सो पेरेंट्स आल्सो दे आल्सो शिफ्टेड टू व्हाट्सएप दे आर आल्सो टेक्स्टिंग यू okay they if you are not in, okay receive my call what happened so they are also texting you तो आपण जेतेबेले आपण डायरेक्टली कास्ते कथा होनंती से केमती फील करची रागुची हसुची कांदुची तर इमोशनल केमती अछि आपण जानि परिबे ना तो डिजिटल डिपेंडेंसी आल्सो इमोशनली को बॉन्डिंग टू कमाया को लागे सेकेंड जिंस गला इनफॉरमेशन ओवरलोड एते सारा जो हमें जो 2024 रे गोटे नुवा वर्ड जोटा कि अपन डिक्शनरी रे एड हेची ब्रेन रॉट माने इनफॉरमेशन बहुत ज्यादा अछि so you don't know which information you should grasp you don't एते मात्रा इनफॉरमेशन अछि अगर एबे हम कहते there is a sufficient amount of information एबे आपण जानते बोले सिविल सर्वेंट में आपण पढुचंती where I would get note कंटेंट कोड पाइबे को कंटेंट एते सारा जिंस अछि ना एबे आपण माने पाया पगला बोला जेटा करबी ना सेटा करबी ना एते इनफॉरमेशन अछि तो सेति में आपण इमोशनली एटा प्रॉब्लम करूची constant influx of information increases stress and hampers emotional regulation आपण माइंड को से चेंज कर दो आपण रील देखुतबे गोटे रील देखले से गोटे कोन इनफॉरमेशन हला आउट रील देखले आउट कोन एते सारा इनफॉरमेशन होची ना आपण माने भाबुचन कोन माने आपण भाबी पारन कैपेबिलिटी आ किछ नै कि गोटे ओपिनियन कलन ही गोटे ओपिनियन कला सब जिंस मिसी गला पारे आपण जो यूनिक इमोशनल इंटेलिजेंस हबा त सेडा धीरे कमी कमी जाउचे बुझो छ नै तो इनफॉरमेशन ओवरलोड साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन अब्यूज
Online harassment negatively impact mental health, weakening emotional resilience. Cyber bullying तुम जो करिवो ऑनलाइन तुम जो थ्रेट दबो तो सेई जिंस भी आपनकर इमोशनल जिंस को आमे कोन करछन तो एई जिंस आपण माने सपोज आपन एसए पचारला कि टेक्नोलॉजी हैज टेक्नोलॉजी माने नेगेटिव इम्पैक्ट कि पॉजिटिव इम्पैक्ट से आपण एथिरे निहाती भाव लिखि परबे तो एआई ऊपर लास्ट 2 years ला आपण एसए एसोसिएशन आपण इंक्लूड भी करि परबे हाउ एआई आल्सो इम्पैक्टिंग बिकॉज एआई आल्सो पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और दैट आल्सो इम्पैक्टिंग योर इमोशनल थिंग ओके सेही भी आपण एटारे लिखि परबे तापर आपण गले सोशल मीडिया प्रेशर सोशल मीडिया पोस्टर हार्मफुल कंपैरिजन करछि कि नै सोशल मीडिया सी एटा कर देला फिलाना कर देला ढिंकाना कर देला मु किछि कर पालिनी कंपैरिजन आज जाउछि तो सेते बेले आपण इमोशनली कोन डिमोरल फील करछन्ती तर सेल्फ एस्टीम आपनकर कोन डिमिनिशिंग सेल्फ एस्टीम आपण भाबो यू फील कॉन्फिडेंट सडनली यू डिमोटिवेटेड ओ माय गॉड आई एम नॉट कॉन्फिडेंट नाउ सेमती एमती कर जाइतले तर हेलानी मु तो एमिति करी ही नै मु क्वाड जिबियो मो लाइफ रे कोन हो कॉन्फिडेंट लेवल आपन डाउन हे जाउछि बिकॉज यू कंपैरिजन जो बड़ी बड़ी जाउछि जेमति के आपण कहउछन्ती ना माने कूल लागिया बहुत ज्यादा कूल लगे इवन ऑल्सो यू डोंट बिलीव स्मोकिंग सिगरेट इज कूल अरे कूल देखा जाओ लेट्स टेक फोटो what is being I mean you are smoking cigarette what is the proud moment in this कि आपण क्लिक करछन्ती फोटो सोशल मीडिया रे अपलोड करछन्ती बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन ओके तर पॉलिटिकल पोलराइजेशन ही जाउछि इंक्रीज पॉलिटिकल डिविसिवनेस makes harder to empathize with opposing views training emotional connection like politician माने गोटे कंट्री सपोज ऑपोजिशन भी किछि गोटे व्यूज अछि बट आपण करि परिबे पोलराइजेशन हे गेला जने ही कंट्रोल करछि गोटे पार्टी कंट्रोल करछि गोटे पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल करछि तो ततले आपण को जोटा बेटर भी आपण एक्सप्रेस भी करि पनंती व्हाट पीपल विल थिंक मो ताको सपोर्ट करछन मो काहे को सपोर्ट करछि बुझ परछ कि नै तापर आपण गथिले वर्क लाइफ इम्बैलेंस हे जिवो ब्लर बाउंड्रीज between work and personal life contribute to the stress and emotional imbalance overwork आपण जदि चाहते मोटे प्लान करते चलो ठीक अछि आज गोटे छुट्टी नै भी काम करि पर सेते गोटे वर्क हे गेला आजकल तो गोटे नुआ फैशन आसी बहुत ही जगह आप देखिए सेकेंड सैटरडे अच्छी सपोज नुआ ए मुझे रियलाइज कर देखी भी तो सेकेंड सैटरडे अच्छी माने दिन गोटे मीटिंग रखा हो सकाल सकाल संडे अच्छी तो आप फ्री हो सेकेंड सैटरडे छुट्टी मिलला फोर्थ सैटरडे छुट्टी मिलला गोटे मीटिंग 4 घंटा 5 घंटा चली तो मैंने ब्लर हो गला पर्सनल स्पेस रे मीटिंग कर स्ट्रेस दौरान बुझे कि नहीं मेंटल हेल्थ चैलेंज राइजिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक एंजाइटी डिप्रेशन एज एनडी जोटा आपन नुआ बे आसी जोना बहुत टीन ले तो से जिन सब धीरे धीरे लोक माने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करिया को लागिलेनी तो मेंटल हेल्थ जोटी हिंडर इमोशनल रेगुलेशन आपण केमति करियो आपण एंजाइटी कंटीन्यूअसली फील करछन्ते आपण कंटीन्यूअसली स्ट्रेस रे रहछन्ते तले आपण इमोशनल इंटेलिजेंस आपण केमति बिल्ड करियो करि परिबेनी that is also problem criticism अच्छी lack of standardized measurement universal accepted method किछि अच्छी emotional intelligence को measure करे पई तो एटा criticism second is potential of for manipulation if somebody is going to know how your emotion is what makes you happy what makes you sad how your emotion things happens how you get easily convinced then manipulation करिवार chances बढ़ी जबो जानि गला ना तो तुम manipulation करिवो unregulated training program the proliferation of unstandardized EQ requires course raises concern kichi standardized course in EQ narrow focus overemphasis in EQ may overlook broader organization and systematic factors that contribute to the success केवल कोन आपण EQ द्वारा बंची जेबे कि ना सक्सेस में आपण आईटी दरकार आपण उडे माने कोन पर्टिकुलर गोटे जगह आपण केमति करिवे सपोज आपण EQ भलो अछि EQ पई का आपण सक्सेस हे जेबे कि ना EQ पई का प्रैक्टिस दरकार आपनकर बुझ पले मेंस पे आपनकर इमोशनल इंटेलिजेंस भलो अछि इमोशनल इंटेलिजेंस भलो अछि स्ट्रेस आपन भलो मैनेज कर परछथि बट आपन पढु नंती आपन प्रैक्टिस कर नंती हाउ डू यू गोना अचीव सक्सेस यू आर नॉट गोइंग टू गेट अचीव सक्सेस बिकॉज़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एप्टीट्यूड आपनकर कमी गला इंटेलिजेंस लेवल आपनकर कमी गला so that is also creating a problem so सेति पे हमरा आसे कि वे फॉरवर्ड डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस कोन तो एवर फ्रेमवर्क अछि एवर फ्रेमवर्क जदि इमोशनल इंटेलिजेंस ऊपर किसी क्वेश्चन पचारे तो डेफिनेटली ट्राई टू इंक्लूड दिस एवर फ्रेमवर्क फर्स्ट ए आसला एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट इमोशंस बी माइंडफुल इफ योर इमोशन इज दे अराइज एक्सेप्ट देम विदाउट जजमेंट टू अंडरस्टैंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द थॉट एंड बिहेवियर जदि किसी इमोशनल आपको एंगर लगुची आपको हैप्पी लगुची आपको स्ट्रेस लगुची टू एक्सेप्ट दैट इमोशन आई एम फीलिंग राइट नाउ बट डू नॉट रिफ्लेक्ट दैट विथ योर थॉट और विथ योर बिहेवियर एवर हवा दरकार सेकंड आसला watch your emotional response
how you respond emotionally situation ला आपण केमती respond करछंती. There is a difference between respond and reaction दउछ ना respond दउछ. Respond जदी करछ emotionally aware हेके करछ कि नाही, regulate करी आछछ कि नाही. W पर आसला आपनकर analyze others emotional state. मु खाली रागी छि बोली मु ही खाली इमोशन दे देबी. आ जण के सैड थिबो भाई, आ जण मन कोन थिबो मु खाली ही मो इमोशन को शो करछि. आ जण के इमोशन को बुझुनी मतोडा फील असला मु कहि दे. बट हमर अपोजिट पर्सन बुझिपारछ कि नहीं. तो सेति पई कोन डेवलप एम्पैथी बाय recognizing and understanding the emotion of others. Pay attention to verbal and non-verbal cues to gauge their emotional state. सपोज आपनकर एग्जाम हैनी आपन फेल हेजन एज अ टीचर अरे तो पढु नथुलु तो कहउथि त कथा मो कथा मानु नथुलु बोलिया को चल जाउथुलु एड जाउथुलु सेड जाउथुलु तो एग्जाम हेलानी. हाउ यू गोना फील बिकॉज़ आई हैव टू अंडरस्टैंड कि दैट पर्सन इज फेल्ड, दैट पर्सन इज फीलिंग लो. First I need to validate. So, okay beta, whatever happens, try harder, give a next attempt. This is how you should, right? मुझे तो आउरी बेसी आपन को इमोशनली डिमोटिवेट करबे, देन आपन को कोन प्रॉब्लम हो तो एनालाइज करिया दरकार. आपन को रेगुलेट इमोशनल रिएक्शंस, डेवलप इमोशनल कंट्रोल बाय प्रैक्टिसिंग टेक्निक लाइक माइंडफुलनेस, डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन भी करि परिबो बिफोर प्रैक्टिस, बिफोर रीचिंग रिएक्टिंग, स्पेशली हाई प्रेशर सिचुएशन. Pause करियो. Suppose you don't know how to handle this stress, suppose suddenly you get angry, just distance yourself from that situation, think about it, after that you react or you give respond. Okay, तब engage the positive emotional interaction, foster healthier relationship by effective expressing emotion. तो expression करे दरकार emotion, any interpersonal relationships, be it in your organization, be it in personal life, always try to give your emotional, express your emotion other way around, so that ki other person can understand how you feel. So this will build your relationship of, it will give you a healthier relationship in expressing your emotions. Showing appreciation and communicating the way that depend connection to avoid misunderstanding haba agaru bhi have to give the clarity. Appreciate करे दरकार if somebody is listening to you, somebody is being grateful. जेमति आपन कहली gratitude हबा दरकार, gratitude आपन सब दबा दरकार भी, because you somebody is helping you, be appreciation. Thank you so much, you have done this. ना मु तो एडमिनिस्ट्रेटर अछि, मु ही डीएम अछि, मु काहे कहा त सुनिबे. तो सेमती हवा दरकार न, बुझबेले कि नहीं. तो जो आपनकर जो अवेयर वाला अछि सेडो को आपण ट्राई करिवे. इफ दे विल आस्क यू एनी क्वेश्चन अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज वेरी high probability this year they are going to ask question from emotional intelligence. Last 2 years they have given emphasis on other things, but emotional intelligence is a very important subject, and administration should be emotionally intelligent. Okay, I hope you enjoyed this session. Thank you so much. Next class कथा बा काली आपण मानकर मेंस रो इकोनॉमिक्स अछि, so try to join. तो आपण किछि ना किछि क्षेत्र आपण को बेनिफिट मिलिबो हला. आ इमोशनल इंटेलिजेंस रो जो भी अछि आपनकर क्वेश्चन सेटा हम नेक्स्ट क्लास कथा हिजबा, बुझबेले कि नहीं. थैंक यू.